the executive member of ESL. Yeah, and Harshit is also with me. Now I ask my fellow to brief you about our society. Harshit, are you there? Yeah. So, hey everyone, ESL and ITH is a team of like-minded people who all I think there might be some network issue from his side. So now I'm going to introduce ESL. ESL NIT Hamirpur is a team of like-minded people who have gathered from multiple domains and departments to bridge the gap between budding entrepreneurs and resources. We are here to nurture, define, and incubate as well as facilitate nascent business ventures from our institute. We are aimed to create a place where students can access entrepreneurial resources, network with the community, and share their ideas with their peers. And now let's talk about SIP. SIP, that is Startup Internship Program, is organized by ESL and IT Hamirpur every year that brings startup companies willing to provide internship to NIT Hamirpur students, a step closer to the aspiring interns. But Harshit, why did you need such an event and these boring talks? Great question. Because, ma'am, everyone like me doesn't know the meaning of words that I'm about to say in their first year, which are internships. And Third is not internships? internships, it's startups Okay. and entrepreneur. No, it's startups and entrepreneur as well. Plus, why not eradicate the struggle of students while applying on different platforms like LinkedIn, D2C, Internshala? Why not better equip them for the corporate world? Why not help them gain business-oriented thinking process, mindset through these different talks on different topics? Now, if you're satisfied with my answer, Kripa karke, I request you to introduce our guest speaker to our audience so that we can Yes, get started right away without any sure. delay. So, Yeah. we are pleased to have Shri Prabhat Labh, CEO of Grameen Foundation, with us as our speaker. Now, let's know about Grameen Foundation. It was founded in 1997, inspired by the work of Nobel laureate Professor Muhammad Yunus, who founded Grameen Bank in the fight against poverty. Over the years, Grameen Foundation has grown into a global non-profit organization that helps the world's poorest people reach their full potential by providing access to essential financial services and information on agriculture and health. Shri Prabhat Labh is an international development leader. He has worked across the globe to empower people, eradicate poverty and hunger. His mission, in his own words as the CEO of Grameen Foundation India, is, quote, to enable the poor, especially the women, to create a world without poverty and hunger, unquote. Now, I also don't know what expectation to have, what to expect just by looking at this talk's topic of the day, which is emerging social business approach in agriculture. So, sir, we are very eager to listen what you have to offer to us. The stage is all yours, sir. Thank you, Harshit. Thank you, Smriti, for that wonderful introduction. Good morning, everyone. I'm very, very pleased to be here. And even though there may be only 16 students, it doesn't disappoint me at all. Some of you might be thinking that what will I think if there are only 16 students on a Saturday morning? No, it doesn't disappoint me at all. I'm actually very happy that you 16, who are here on this call, have taken the time for this session, because for any change to happen, it doesn't require a crowd, 1,000 or 1,000,000 people. A change can start with one individual who thinks differently, one individual who has the courage to think about, take that, as they say in William Wordsworth's poet, to dwell along the untrodden path. So you 16 people who are on the call, or 17 people, kind of, are an example of young people who are interested in understanding about an unconventional space. Because traditional business, we all know, we all understand, we all hear about them since the day we we are born, and we hear about traditional businesses every day.
But this word social business, I'm sure, of course, you would have heard about it before, but it's important that we understand what is meant by social business. When we call certain type of businesses as social business, do we mean that other businesses are not social or asocial? Uh, so I think it's important to understand that nuance. In today's talk, my effort will be to kind of help you all understand what do we mean by social business. How is it different from just a business, right? Um, and also share with you about some of my own journey of last 26 years after I passed out of my college and entered the professional world. Some of the things that I have learned, and also with regard to the opportunities that I see in the space of social business. And I'll also share with you an example of a social business that we have also set up in Grameen Foundation. So I'll also talk a little bit about that. I'll also welcome that, if you have any questions or any comments, we will definitely keep time aside for that towards the end of the talk. But do not wait for the end of the talk. Keep, putting your questions and comments in the chat box so that you do not lose the thought of, when any question comes to your mind, right? So that, by the time we kind of, get to the end of talk, there's already kind of, I know, okay, what are the kind of topics you want to talk about, right? So any questions, suggestions so far? Anyone? Just say yes, no, whatever. I think, yeah, I mean, that's a challenge with the virtual platforms. We may try to make it interactive, but the platform has its limitation. So there's only so much you can do virtually. Uh, Although we must appreciate that in last 2 years, what these platforms have showed us is that, even in a locked down world, these kind of platforms can help us do so many things, right? Work, remotely, run offices remotely, do meetings remotely, meet people virtually and remotely, attend classes or deliver lectures remotely. So in that sense, I'm not the one complaining about the virtual platforms, but also we have to acknowledge the limitations of such virtual platforms. And I, of course, am always a fan of meeting, in person interactions. It not only make it more personal, it also helps in better engagement. It also kind of, breaks the barrier. So, in that sense. But of course, so you all the students on this call are part of what, BTech or MTech? So it's mostly BTech. Mostly BTech. And the first Yeah. year, second year, that's what I heard. Yeah, first and second year and third year as well. Some third year students are also there. Yes, sir. Okay, great, fantastic, thank you. So let me first share a little bit about myself, and then I'll talk about my work. Uh, I've been working in the social impact sector for last 26 years. So that's a long time, perhaps longer than most of you were born. So I must have started working before that. Um, and these if you have observed the world around us in last 15 years, the time that you would have seen and be conscious of, you would have seen how fast the world is changing, right? Every day new things are happening, new ways of doing things. So of course, you extrapolate that, by to 25, 30 years. So I have really seen the world change in front of my eyes. So that pace of change has been really phenomenal. In fact, it was when I was in the university, that's when the computers started arriving, desktop computers started arriving for the first time at workplaces or in the universities. Before that, we had never seen, never heard of computers. Mobile phones had not yet arrived. Simple mobile phones, smartphones, of course, came very, very recently. Uh, uh,
emails were not there, all of that. I kind of grew up at a small place in Bihar, had most of my education in small villages and small towns. Um, and later on, for my graduation, undergrad, I went to a university called Banaras Hindu University. And thereafter, I did my postgrad at the Indian Institute of Forest Management in Bhopal. So yeah, I mean, I had why I share that is to let you know that have had a very modest education. I come from a very modest background, but what has really helped me, in fact, when as I was doing my university and coming out of university to get into a professional world, um, of course, everybody aspires to be successful, right? And I also had my aspirations and dreams. It's really important to aspire. It's really important to be ambitious, because that's the first important ingredient to be successful. If you do not aspire, if you do not dream, if you do not have ambition, the growth becomes very difficult. You cannot grow. So but yeah, I mean, as I was coming out of my university, I if somebody asked me, where do you see yourself in 25 years from now, I couldn't have imagined where I am today, right? So in that sense, I'm very thankful with what has happened to me, with organizations, with people who believed in me, people who trusted in me. But also, one thing which has really been important, which has helped me, is a kind of self-belief that if I put in my efforts, sincere efforts, with honesty, dedication, hard work, then there's nothing that can stop me. In fact, I believe that every human being, has infinite potential. I'm sure you would have heard from, I think Einstein or somebody who said that, human mind, most human beings are only able to use 3 or 4 or 5% of their capacity. So imagine if with only using 3 or 5% of our capacity, humankind can make so much progress. What if we could just double that to 10% or to 20%? How much more is possible? So that way, uh, humans have infinite potential, but it is about uh, dwelling into your own reserves and potential and exploring what is possible. Uh, and that requires you have to have a vision. It requires you to have an ambition, and it requires you to be ready to put in the hard work and effort, so that you can realize your vision, so that you can realize your ambition. When that vision and ambition is there, and there's that willingness to put in the hard work, and when there's that perseverance and determination that I will not give up, irrespective of whatever obstacles that might come my way, that's when progress is possible. In fact, I had a very, very modest, I was a very, average or below average student in my academic life. And I have no shame in sharing, because I know that people who make it to NIT are very, very bright people. I was not bright enough to get into an NIT or even a state engineering college. I tried, I did not. So that's the proof that I was a very modest average student. Um, but as I entered my professional life, this belief that with hard work I can get anywhere, uh, that has really been proven true in my case, at least. I believe in the rule of 120% effort being necessary for making progress. Most of us say that you need to put in your 100%, right? 100% is what everyone has to put. 100% is what everybody wants to put. So if you put in your 100%, you are average. You are just one out of the many who are putting in 100%. You will never outperform. You will never outgrow others.
if you put in 100%. I'm sorry, I'm digressing from your main topic a little bit, but when I interact with students, try to make it a point to emphasize on these traits before you even think about business, social business, or whatever. So if you put in 100% effort, you will be just an average student and you will remain an average performer. When you are willing to put in extraordinary efforts, go above and beyond what is normally possible, that is what going above 100% means. When you put in your 120% effort, when you go out of your comfort zone, when you feel tired at the end of the day, when you feel sleepy because you haven't had enough sleep, right? They say that, okay, 8 hours of sleep is necessary, minimum 6 hours. But when you cannot even sleep for 4 hours because you have work to do, that is like pushing yourself. When you push yourself and do that, that's when you kind of rise above, because that's extraordinary effort. And that's what is necessary for being extraordinarily successful, right? So, I mean, just a few, insights I thought I'll share with you before I actually start my actual talk. I have had a very interesting, career. As I was passing out of my master's, doing forest management, I had a couple of options. Uh, just one moment. I had a couple of options. Uh, One was to join a market research firm, a management consultancy firm, and that was my natural choice because my undergrad was in statistics, so I loved numbers. I had a knack with numbers, so I thought, okay, if I'm good with numbers, quantitative analysis, market research and management consulting would be a good field for me to get into. And I actually got a job uh, with a very reputed market research firm of that time. Interestingly, I also got another job offer from an NGO, a non-profit organization based out of Udaipur, South Rajasthan, called Vidya Bhavan, which used to work with farmers, which used to work on things like irrigation, micro irrigation, which used to work on things like crop extension services, animal husbandry services, soil and water conservation, watershed management, micro irrigation, those kind of stuff. And I made my first somewhat irrational decision of my life. I told you that, I was good in numbers, statistics, right? I got my dream job, which was to get into a management consultancy, which was also a well-paying job and which had a predictable career trajectory because you are in a proper mainstream corporate sector, right? And I got another job from an organization I had never heard of, which works in a domain that was not my domain. I have no educational background in agriculture or anything. But I thought that, okay, if I really want to become a good management consultant, I need to have a good understanding of uh, the real world, the real life. That will make me a good management consultant, right? So I thought, okay, I can become a management consultant any day. But this opportunity that I'm getting today to go and work with the farmers on the ground with an NGO, that opportunity may not come. So let me do this for a couple of years. And then I'll go back and become a management consultant. So I took a longer route to do what I had to do, right? Instead of, I had the management consulting job in my hand, I did not take it up. I said, okay, I'll get here, but I'll take a slightly longer route, a circuitous route, and I'll do it. So I went and joined this job in Udaipur in South Rajasthan and worked there for 2.5 years. And then one thing led to the other. I, in fact, never went back to management consulting, 25 years, 26 years. And never have I even once regretted my decision to not make a straightforward decision, but to make somewhat of an irrational decision. Because this decision has really been so good for me.
It has really helped me understand the world around me, understand the real world. I don't know how many of you come from a rural background or urban background, but I think, if you are from a rural background, you have not seen everything about life in, say, urban areas. If you're from an urban city, again, you do not know much about what is life like in a rural area, right? How do people live in forests? How do farmers lead their life? How do artisans kind of lead their life, and all of that? So any opportunity to understand the world, to understand the life, to understand the people, uh, grabbing those opportunities has proved to be good for me. And especially from a social business perspective, if you understand the world around you, you will have a better understanding of the problems in that world, and then you will be able to in a better position to fix those problems, right? So that's the kind of a little bit of context to social business that I wanted to share. A couple of more things are important that I'll share, and then I'll actually come to a definition of social business. What is actually meant by social business? In the meantime, if I may ask you, this is not an in-person interaction; it's a virtual interaction. What do you understand by social business? If you don't mind writing that in the chat box, anything, a couple of words, a word, a sentence, anyone, all of you, please write in the chat box. I'll kind of read through that as I'm kind of talking about a couple of more traits. Yeah. So I mentioned unconventional, irrational decision that I made in my life at the start of my career, which actually changed my career trajectory. I have actually made many more such somewhat irrational choices. Uh, when So me and my wife, we both work in social impact sector, and when my daughter was born, and my daughter was like 2 months old, uh, we had always thought of we will go and live in and work in Africa, because that's perceived as the most underdeveloped or least developed kind of continent, right? So we thought, as a development sector professional, we must go and live and work in Africa. And when my daughter was 3 months old, an opportunity came, and we decided to move to Africa. We moved to Tanzania. And everybody in my family, as well as her family, and amongst the friends, all of us thought that was a very irrational decision. Why would anybody with a 3-month-old daughter, go to Africa, where there may not be any healthcare facility, where there's so much of malaria, where there may not be even electricity or air conditioning, where tigers and lions may be roaming on the streets? That's the kind of image and perception people had. But we made the decision, and we went there. We had a fantastic time in Africa. We lived in Tanzania for 3 years. We lived in Ethiopia for a year. Then thereafter, I moved to Canada. I worked with the MasterCard Foundation, lived in Toronto. So 5 years we lived in Canada. And when everybody thought that, okay, we have settled down in Canada, because everybody goes to Canada or US or Australia, and then they settle down there, never to come back, I got an opportunity, a call from Grameen Foundation one day, that we are looking for somebody to lead our India operations. Would you be interested in coming back? I said, yes, why not? So it took me all of 24 hours to make the decision to leave Canada and come back to India. So as you can see through these, anecdotes, I have been making these somewhat illogical and irrational kind of decisions all my life, but it has proven to be good. What is important is that when making these decisions have to be made by a combination of your mind, and by combining it with your heart, with your passion. You cannot make all your decisions only with your mind, because if only by applying mind, would not have made any of these decisions that I talked to you about. But when you combine your passion with your mind and your heart, that's when you can really accomplish things in life. So that passion is very, very important, especially when you talk about social business. Because if there's no passion, you cannot really do justice to a social business, right? Let me open up the chat box and see if
some people have. So may I ask, what is your definition of passion? Like, if one says passion, then we usually think like he's somewhat crazy. He cannot like live a peaceful life without achieving that. मतलब, what do you think what passion is? हम्म कभी आपको किसी ने बोला है तुम पागल हो? यस नो? Yeah, sometimes. कब बोला है? क्या कर रहे थे आप? Like I was in childhood and I was doing some crazy thing with clay, हम्म and uh, that time I can remember my mother said, "Tu pagal hai kya? What are you doing with the clay?" हम्म Like that. बट यू डिड यू लाइक वट एवर यू डूइंग विद क्ले और यू हेटेड इट? जब आप वो खेल रहे थे हाथ और पांव और सब Uh-huh. जगह, आपको मजा आ रहा था या गंदा So लग रहा था? I was very curious. It was ना मजा आ रहा था ना गंदा लग रहा था. I was curious to know कि मैं इससे क्या कर सकता हूँ, ये इसके मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूँ. Yeah. So that is what, passion is. You're trying to discover something, right? As a child, children are curious, right? And when you put in your effort, your time, your energy, make your hands dirty to follow your dreams, to chase your aspirations, even if it does not make logical sense, then that is what I would call as passion. कन्वेंशनल चीजें बोली जाती. आप सब लोग हॉस्टल में रह रहे हैं कि घर से पढ़ रहे हैं अभी? So I am at home. अच्छा, ओके. Yeah. आप में से कोई अभी हॉस्टल में है या हॉस्टल में रहा है पहले फर्स्ट ईयर में? I don't think so. First year I have been to hostel once. हाँ, लास्ट 2 ईयर से लॉकडाउन की वजह से. या Yeah. व्हाई आई एम आस्किंग दैट इज बिकॉज I have had the fortunate experience of living in hostel for 5 years, undergrad and postgrad दोनों में. तो जब आप घर पे रहते हैं तो योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स विल से कि टाइम से सो, सुबह जल्दी उठो, रात में गो टू बेड एट टाइम, एंड देन ऑल ऑफ दैट गेट्स ओवरटर्न्ड द मोमेंट यू गेट टू हॉस्टल. कोई रात में सोता नहीं है, कोई सुबह टाइम से उठता नहीं है. 9 o'clock क्लास है तो बट 8:50 का अलार्म लगा के और बस आंख मूंदते मूंदते पहुंच जाते हैं क्लास में. होता है ऐसा? सो पैशन का एक और ये पहलू है कि यू डू नॉट डू एवरीथिंग बाय सेट ग्राउंड रूल्स. यू आर open to willing to experiment with things that are where boundaries can be broken in a non harmful manner. ये एक important शब्द मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि after gaining so much experience, it's important to highlight that in a non harmful manner. अगर बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, अपने को कष्ट पहुंचाए या कुछ ऐसा कि करे जिससे कि बाद में हमें पछताना पड़े, इन नॉन हार्मफुल मैनर अगर हम बाउंड्रीज को एक्सपैंड कर सके तो उसके लिए पैशन चाहिए होता है. पैशन नहीं होगा तो आप बाउंड्रीज के अंदर ही रह के करेंगे. फिर आप बोलेंगे कि अच्छा, टीचर्स तो बोलते हैं कि होमवर्क है, ये प्रोजेक्ट है, इसको इतने बजे सबमिट होना है, रात में इतने बजे सोना है, व्हाटएवर. तो यू विल नॉट ब्रेक द बाउंड्रीज, है ना? तो बाउंड्रीज ब्रेक करने के लिए, या ब्रेक करना जो है गलत वर्ड लगता है. अगर मैं बोलूं कि बाउंड्रीज को एक्सपैंड करना है, होराइजन को एक्सपैंड करना है, तो वो पॉजिटिव साउंड होता है. So that requires passion, right? Anyway, so somebody has, Harshit आपने लिखा है, business driven by passion for helping others to give back to society instead of craving for money. आपने लिखा है, and that focus on a dominating prevailing problem in society. Yes, I think दोनों ही चीजें जो आपने लिखी हैं, helping others, give back to society, focus on prevailing problems in society, ये सभी जो है important aspects हैं. So let me share with you, the definition of social business, and why I am proud of sharing that is that because in my introduction, I think आप बता रहे थे कि I joined Grameen Foundation, which was inspired by the work of Nobel laureate Professor Yunus. So in fact, Nobel laureate Professor Yunus जो हैं, वो ना केवल ग्रामीण बैंक के फाउंडर थे, एंड ना केवल वो ग्रामीण फाउंडेशन के इंस्पिरेशन है. He is also called the father of social business. In fact, he's the one who, about 14-15 years ago, coined the whole idea of social business. So I'll just share with you on the screen.
Oh, I'm not able to share my. No, I'm just trying to. ठीक है, वो स्क्रीन में शेयर नहीं कर पा रहा हूँ फॉर सम रीजन. तो just give me a moment. Yeah. So, प्रोफेसर यूनुस ने जो सोशल बिजनेस का डेफिनेशन दिया है, so that reads, a social business is a non-loss, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, non-loss, non-dividend company designed to address a social problem. The profits are used to expand the company's reach and improve the products and services. Now, I don't know how many of you, is there anybody who comes from an accounting background? Like BCom वगैरह किसी ने पढ़ा है या कॉमर्स पढ़ा है? Anyone from commerce background? 10th में, 11th में, 12th में कॉमर्स पढ़ा हो? Maybe I think that's not the right question because आप इंजीनियरिंग में हैं तो आपने कॉमर्स नहीं पढ़ा होगा, आपने साइंस पढ़ा होगा. So that's a wrong question. Yeah. So कॉमर्स या अकाउंटिंग किसी ने अगर पढ़ा हो, फ्यूचर में आपको पढ़ेंगे, अगर आप में से कोई मैनेजमेंट उस फील्ड में जाएगा तो आप बोलेंगे, आप पढ़ेंगे कि कोई भी बिजनेस का एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट होता है कि इट इज अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है उसका पर्पस होना चाहिए. बिजनेस का एक फंडामेंटल पर्पस होना चाहिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट? और इस डेफिनेशन में प्रोफेसर यूनुस इज नॉट टॉकिंग अबाउट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ऑल ही इज सेइंग कि इट्स अ नॉन लॉस मेकिंग एंटरप्राइज, है ना? इट्स अ नॉन डिविडेंड पेइंग एंटरप्राइज. बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस मेक्स प्रॉफिट, तो द business का जो profit है that gets distributed amongst its shareholders in the form of dividend, right? So what Professor Yunus is saying कि business तो profit making होना चाहिए पड़ेगा. You cannot say कि non profit business है, right? क्योंकि और तो इसलिए ही saying non loss making. अगर आप loss making है तो you cannot survive. Basically आपका business बंद हो जाएगा. बंद हो जाएगा तो आप कुछ impact नहीं create कर पाएंगे. So आपको नॉन लॉस मेकिंग होना चाहिए, नॉन डिविडेंड पेइंग होना चाहिए. आप नॉन लॉस में है तो मतलब आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट जो है इन्वेस्टर्स को एज अ डिविडेंड नहीं जाना चाहिए, राइट? एंड नाउ आई विल कम टू एक्चुअली 7 principles of social business. Professor Yunus also not only gave the definition, he also said, okay, what do we characterize as principles of social business? So I'll just go to that. So पहला प्रिंसिपल कहता है कि business objective will be to overcome poverty or one or more social problems like in education, health, environment, technology access, skill development, etc. Not profit maximization. So why we exist? अगर ये प्रश्न पूछा है कि why do you exist? So एक typical business जो है या business person will say कि I'm here for profit maximization. So एक बहुत fundamental question है, why do we exist? Why this business is set up? So Professor Yunus is saying कि the business is set up for alleviating a problem, a social problem, not for profit maximization. ये पहला प्रिंसिपल है. दूसरा प्रिंसिपल ये है कि फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, कि आप जितना पैसा खर्च करोगे, मान लीजिए कोई आप प्रोडक्ट से सर्विस ऑफर कर रहे हो, तो उससे जो रेवेन्यू आएगा, दैट रेवेन्यू मस्ट मीट द फुल कॉस्ट ऑफ providing that products and service, otherwise you will not be sustainable. If you're not sustainable, you will end up making losses and you will have to close down. So अगर एक बिजनेस से आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, बड़े स्केल पे इम्पैक्ट करना चाहते हैं, you will have to make profit. The enterprise will have to make profit, right? So it has to be economically and financially sustainable. फिर he talks about the third important principle, which says कि investors will get back their investment, their principal, but not
डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स। वो इसलिए जरूरी है, प्रोफेसर यूनुस ने बोला कि अगर इन्वेस्टर्स को अपना पैसा वापस नहीं मिलेंगे तो वो पैसा लगाएंगे नहीं, राइट। लेकिन especially on this topic of whether investors should get a return or not on their investment, इसमें there's a difference of opinion between Professor Yunus and so-called impact investors. आजकल impact investment has become a very large field. Billions of dollars are going into impact investment, but they all seek return. Professor Yunus says that you should not seek return, you should only seek your capital as return back to you. So there's a fundamental difference between what Professor Yunus says and what rest of the impact investment community says. He also says that when the investment amount is paid back to the investor, जो company ने profit कमाया, that profit stays with the company, right? Company has to earn profit, company has to retain profit. Why? Because अगर आप profit retain करेंगे, you will be able to invest that in further expansion of your business, in further development of new products and services, in improving the quality of your products and services. अगर आपका पर्पस है सोशल इम्पैक्ट, मान लीजिए आप हेल्थ केयर में कुछ एक अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर सर्विंग 500 पीपल, 5 विलेजेस, राइट। लेकिन आप देखिए कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। यू नो 35% ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया आर स्टंटेड या malnourished. अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट अभी भी हमारी जो है नीड्स टू बी फर्दर कम डाउन, मैटरनल मोर्टेलिटी एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो अगर 5 गांव में 500 लोगों को हमने इम्पैक्ट कर दिया तो दैट्स नथिंग, इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन। तो इसीलिए आपको आज 500 लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, कल 5,000 लोगों को करना पड़ेगा, उसके बाद 5 लाख लोगों को करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो? कैपिटल कहां से आएगा? वो कैपिटल आप एक्यूमुलेट करेंगे एज बिजनेस बाय retaining the profit rather than giving the profit back to the investor, right? So profit कमाने में business को कोई problem नहीं है. In fact, business must earn profit, right? The purpose of business is not to earn profit. The purpose is to serve the society. The purpose is to, address a social challenge. And earning profit is a means to get there so that you can serve society at a larger scale in a bigger manner. ये एक बहुत especially at young age, some of us might come from an idealistic background and we may think that profit is a bad thing. Profit is not a bad thing. How the profits are used, that determines whether profit is a good thing or a bad thing, right? एक पांचवा प्रिंसिपल है प्रोफेसर यूनुस जो कहते हैं कि a social business has to be environmentally conscious. I'm sure you would have heard about climate change. I'm sure you would have heard about pollution in our water bodies. I'm sure you would have heard about the pollution, in the air pollution, जिससे कि पूरा air quality खराब हो जाती है, water में quality खराब हो जाती है, all that. जंगल हमारे कट रहे हैं, प्लास्टिक जो है वो that's choking our water bodies. तो a social business में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप एनवायरमेंटल के लिए डैमेजिंग कुछ काम करें। अगर आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर आल्सो जनरेट्स अ लॉट ऑफ hazardous waste, right? So you cannot just dump that hazardous waste anywhere without taking responsibility for it. So you have to be conscious for your environment. In fact, environment के बारे में ये है कि कहते हैं कि ये जो planet है, ये हमने अपने पुरखों से इनहेरिट नहीं किया है, ये हमने हमारे फ्यूचर जनरेशन से इनहेरिट किया है और हमको उनको वापस करना है. वी आर कस्टोडियंस ऑफ इट, राइट. जिस स्थिति में हमने इसको इनहेरिट किया है, एटलीस्ट उसी स्थिति में हमको अगले जनरेशन को पास ऑन करना है. अगर हमने उससे खराब स्थिति में किया, पोल्यूशन फैला के किया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, व्हाटएवर, so then we have not been a good steward of our resources, of our planet. So we must pass on this planet and environment in a state, in the same state in which we inherited it. That's our responsibility. We don't own it, right? We are just a passenger. We are just a traveler, time traveler,
तो environmental conscious, दो और principle हैं, I'll touch upon them. So he's saying कि the workers in a social business must get market wages and with better working condition, right? You cannot say कि हम social business हैं तो इसीलिए हमारे वर्कर्स को जो है, अगर मान लीजिए कि मिनिमम वेज 300 रुपया है पर डे, तो हम हमारे वर्कर्स को 200 रुपया देंगे क्योंकि हम सोशल बिजनेस हैं भाई। या हम ये नहीं कह सकते कि हम एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाते हैं और एक डॉक्टर का नॉर्मल मार्केट में मंथली वेज इज लेट्स से 80,000 रुपीज, बट बिकॉज वी आर चैरिटेबल हॉस्पिटल तो इसलिए हम हमारे यहाँ डॉक्टर्स को 50,000 पे करेंगे। यू कांट डू दैट। यू हैव टू पे मार्केट वेजेस to your workers, right? And you have to give them a good working condition. You cannot put your workers in the way of harm, है ना? You cannot exploit your workers the way many of the private sector industries do. It's a fact of life, right? So we have to be responsible towards, not only I talked about responsibility to the environment, we also have to be responsible to our workers. So सबसे पहला था why we exist, the purpose, which is our responsibility to the customers. कि customers के life में क्या change आएगा by the social business. Second was about responsibility to the environment. Third is responsibility towards your workers. And then एक last point जो कि बहुत important है, I think you will really appreciate कि Professor Yunus ने ये बात बोली. Responsibility towards yourself. He didn't say it in so many words. He said, do it with joy. इसको आप खुश होके करिए, मजा आए तभी करिए, राइट? तो जॉय जो है वो तो आपका अपना है ना। सो दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योरसेल्फ। तो ये सब जो है दैट्स लाइक डेफिनेशन ऑफ सोशल बिजनेस। एनी कमेंट्स और क्वेश्चन सो फार? मैं वन वे बोलता जा रहा हूं, पता नहीं मेरी बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, या आई शुड चेंज द स्टाइल? No, sir, it is very interesting. I'm also making the notes. So I'm getting everything. And plus, if you are having any problem in sharing the PPT, you can share it to me and I can present it on the screen if you're comfortable. Okay. Let me just email that to you. Google Meet में मेरे साथ होता है, Zoom में नहीं होता है, but Google Meet में I have faced that problem many times. Sir, I'll just put the Gmail ID in chat. Yeah, sir, I have posted my email ID in the chat box. You can send it on. Yeah, this एक email. मिनट रुकिए। Yeah, I've just emailed you a slide deck. It might take you like a minute before you receive it. Okay, sir, I will check. That's okay. Let me continue. Right. So I was talking so far about the definition of social business. I actually wanted to share with you an example of social business that we at Grameen Foundation have set up.
And just to demonstrate to you, कि how we are thinking about that as social business. बट आपका टॉपिक यह था कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में सोशल बिजनेस की आप क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, राइट? तो it's good you are thinking about agriculture. I don't need to kind of belabor the point ki how important agriculture is for our country. 58% of our labor force workforce works in agriculture sector. And unfortunately, they only produce around 18% of our country's gross domestic product (GDP). So 58% जो लोग agriculture में काम करते हैं, their share of national income is only 18%, right? So no surprise कि average income of farmers is significantly lower than people working in the non-farming segment. In fact, agriculture per se में input cost बहुत बढ़ गई over a period of time. With जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी, लेकिन साथ में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बहुत बढ़ गया. लैंड की बात तो आप भूल ही जाइए, बिकॉज लैंड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव. नोबडी कैन बाय लैंड एंड डू कमर्शियल एग्रीकल्चर. दैट विल बी कंप्लीटली अनवायबल. बट इवन द कॉस्ट ऑफ योर इम्प्रूव्ड सीड, हाई यील्डिंग वेराइटीज, जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज, कंपोजिट वेराइटी सीड्स का है, पेस्टिसाइड का है, फर्टिलाइजर का है, इरिगेशन की कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट जो है, एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, वो सब बहुत बढ़ गया है. जो फूड ग्रेन का प्राइस है वो उसके हिसाब से नहीं बढ़ा है, राइट? In fact, all of us in our middle class families hear about, अरे महंगाई बहुत बढ़ गई है, food has become very expensive. But actually, it's a myth. It's a myth. इसलिए मिथ है क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारी एवरेज इनकम किस हिसाब से बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम, एंड उसके हिसाब से फूड का प्राइस किस हिसाब से बढ़ा है कंट्री में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म एवरेज. यू टेक अ 30, 40, 50 ईयर एवरेज, यू विल फाइंड कि फूड प्राइसेस हैव नॉट इंक्रीज्ड एट द सेम पेस एट व्हिच द इनकम्स हैव इंक्रीज्ड, व्हिच मींस कि एज अ कंज्यूमर जो लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर पेइंग लेस एंड लेस पार्ट ऑफ देयर इनकम टुवर्ड्स फूड. बट फॉर द प्रोड्यूसर इट्स अ चैलेंज. कंज्यूमर के लिए तो बढ़िया है, producer जो है is not getting the remunerative prices for the produce. Now that's... Sir, is my screen visible? Yes, I can see it. Thank you so much, Didi. So, Sir, yes, please. sir, I have one question. Please go ahead. Like agriculture sector is growing because it's a basic need of human need. And sir, how we can implement business in that sector using Correct. technology of... Correct. Very good question. Yes. So एक तो मैंने बताया कि प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है, 58% of our country is involved in that. They only get 18% of their share. But आपको ये भी पता है कि India is having agri commodities export worth $35 billion a year. क्या आपको मालूम है कि मतलब एग्री फूड प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेस्ड फूड का एक्सपोर्ट, प्रोसेस्ड फूड का टोटल मार्केट जो है इंडिया में, नॉट जस्ट एक्सपोर्ट, इंडिया में जो मार्केट है $263 बिलियन का मार्केट है, 19.3 ट्रिलियन रुपीस, 19 लाख करोड़ का मार्केट है प्रोसेस्ड फूड का इंडिया में. इंडिया का जो रिटेल सेक्टर है, दैट्स द 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. रिटेल है ना, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, जैसे आप बिग बास्केट और मोर और ये सब जो सुना होगा आपने, 6th लार्जेस्ट इंडिया में, और उसका 70% ऑफ द रिटेलिंग इन इंडिया इज रिलेटेड टू फूड. ठीक है, तो आप इमेजिन करिए कितना बड़ा मार्केट है. बिटवीन द ईयर 2017 से लेकर 2020 के बीच में जो एग्री टेक सेक्टर है, that has attracted venture capital investment of over $1 billion. If you've heard of names like Dehat and Ninja Cart and so many startups, organized retail, ag tech startups, so there's a lot of money coming. So there's lots of business opportunity in agriculture. तो पहले जो मैं बात कह रहा था वो ये बोल रहा था कि एग्रीकल्चर के जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, they are not getting a good return out of
एग्रीकल्चर, राइट? बट इट डज नॉट मीन कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी नहीं है. अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज एग्रीकल्चर, फूड हम सबकी फंडामेंटल नीड है. सबसे पहली नीड है फूड. हवा, पानी, खाना, ये तो एकदम बेसिक नीड है ना. तो विच मीन्स कि महंगा हो या सस्ता हो, कुछ भी हो, हम खाना तो खाएंगे. विच मीन्स कि ये एक सेक्टर है विच विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन. क्वेश्चन इज कि वेयर डू वी सी अपॉर्चुनिटी देयर, राइट? सो आई जस्ट यूज दीज नंबर्स टू शो यू कि अपॉर्चुनिटी है, तभी इतना पैसा आ रहा है वेंचर कैपिटल के थ्रू, तभी इतना इंडिया से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हो रहा है. इंडिया में आप चारों तरफ देखेंगे कि आपको दिखेगा कि हाँ, इंडिया में लोग पैडी मतलब राइस ग्रो करते हैं, धान ग्रो करते हैं, व्हीट, सॉरी गेहूं ग्रो करते हैं. पैडी एंड व्हीट बिगेस्ट कमोडिटी. इंडिया का जो है स्टेपल क्रॉप, जो ये चीज हुआ ना, पैडी, राइस, कॉर्न, ये सब का प्रोडक्शन जो है वो करीब 300 मिलियन टन एनुअली है ना, विच इज इनफ टू मीट आवर कंजम्पशन नीड ऑफ जो 1.3 बिलियन लोग हैं हमारे यहाँ. ऑलमोस्ट सभी चीजों में इंडिया फूड सफिशिएंट है, कुछ चीजों में नहीं है. ऑयल के केस में इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है. इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, तो इस बहुत सारी कमोडिटीज में. शुगर केन में इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. व्हीट में वी आर द, आई थिंक, सेकंड लार्जेस्ट. तो we really have a massive opportunity in that whole sector. Now इसके अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहां से निकल के आती है, वो ये है कि अगर आप देखेंगे कि इफ यू ट्रैक द वैल्यू चेन ऑफ एनी कमोडिटी, है ना, आप अनियन को पकड़ लीजिए, प्याज या पोटैटो को पकड़ लीजिए. एज ए कंज्यूमर आप शायद अभी पोटैटो 30 रुपीज पर केजी खरीद रहे होंगे. आप आज की रेट में किसी फार्मर से जाके पूछिए कि आज जो उसने पोटैटो प्रोड्यूस किया, कितने रुपए में उसने बेचा, एंड मोस्ट लाइकली आप सुनेंगे कि 6 रुपए किलो में बेचा, 8 रुपए किलो बेचा, 10 रुपए किलो बेचा. There's a huge gap, huge difference between what the consumer pays and what the producer receives. And that's where the opportunity is. How you can make the supply chain more efficient. Yeah. So that, you can be more competitive. Yes, sir. है ना? You can get more return to the producers. You can also earn a profit out of that. इतनी बड़ी सोशल मीडिया आप सब लोग यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, याहू, जीमेल यूज करते होंगे, फेसबुक यूज करते होंगे. इसमें किस चीज के लिए आपने पे किया है आज तक? No, sir. ईमेल इज फ्री या फेसबुक इज फ्री, सब कुछ फ्री है, राइट? बट इट डज टेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू बिल्ड दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड टू रन देम, राइट? Yes, sir. तो which means कि they have found a business opportunity in running these platforms and giving these services to you for free. Likewise, agriculture अगर इतना बड़ा business है जिसमें कि 200 million farmers involved हैं, right? जिसमें कि मतलब half of our land in the country is involved, and जो production है that can be, उसमें hundreds and thousands of suppliers हैं, buyers हैं, sellers हैं, input providers हैं. It is affected by things like rainfall, wind pattern, drought, whatever. So imagine how much role information, just access to information, may have for this business. कि अगर इस साल rainfall अच्छा होने वाला है तो let's do this, let's not do this. अभी globally अगर shortage है, मान लीजिए oil seed की, तो let's move into oil seed. अगर हमको लग रहा है कि इस सब चीजों में ज्यादा रिस्क है, लेबर कॉस्ट ज्यादा है, let's move into horticulture. India is the world's largest horticulture producer. India, in fact, produces more in the horticulture commodities, like fruits and vegetables, than even the staple crops, right? And that is an important change that has happened in the last 20 years. So there are opportunities, right? Any other question या follow? Sir. Yes. सर एक और क्वेश्चन था मेरे ही. सर जैसे कि हम एग्रीकल्चर में हमारी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है हमारे प्रोडक्ट का. और सर फार्मर्स को गवर्नमेंट भी कहती है कि मशीनरी यूज़ करो, मॉडर्न मशीनरी, तो क्या कहते हैं उसमें यील्ड ज़्यादा होगी. बट सर ये मशीनरी बहुत महंगी होती हैं.
राइट। और इंडिया जैसे कंट्री में इतने बड़े फार्मर्स के लैंड नहीं होते कि वो मशीनरी को अफोर्ड कर पाए। लाइक गवर्नमेंट ने कहते कि 2-3 लोग मिल के ले लो या फिर फंड कर लो लोन वगैरह। सर बट ये मतलब इंडिया के हिसाब से ये ठीक नहीं लगता, क्योंकि सर फार्मर्स के जो लैंड होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं सर 20 to 30 मीटर के होते हैं। तो सर इनको कैसे हम क्या कहते हैं इनको ठीक कर सकते हैं? या सो आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर जो इसका रिस्पॉन्स है ना, उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड अ सोशल बिजनेस। अगेन आप वो लेंस लगाइए। अगर आप केवल एज अ बिजनेस सोचेंगे, मान लीजिए एग्रीकल्चर एज अ बिजनेस, राइट, तो पर्पस ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फार्मर शुड डू एवरीथिंग to reduce the cost of operation, cost of cultivation, and increase the output prices so that the farmer can maximize their income, right? Yes. लेकिन आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ कि पंजाब में किसान जो है वो स्टबल बर्निंग करते हैं, उससे पोल्यूशन होता है नॉर्थ इंडिया में। Yes sir. सुना है? Yes उस sir. उस पूरे प्रॉब्लम का जेनेसिस मालूम है आपको कि क्या है जेनेसिस? कहां से वो प्रॉब्लम आई? No sir. पूरे प्रॉब्लम का जेनेसिस ये है कि जब ये फार्म मैकेनाइजेशन होना शुरू हुआ पंजाब में, जो है बड़े बड़े फार्म थे, लेबर शॉर्टेज थी, तो बिहार से, यूपी से लेबर वहां जाके हार्वेस्टिंग के टाइम हार्वेस्ट करते थे, राइट? Yes sir. तो उस समय बिहार यूपी में शायद जॉब अपॉर्चुनिटीज कम थी, तो वहां के लोग माइग्रेट करके पंजाब जाते थे वहां के फार्म पे काम करने के लिए। ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे बिहार और यूपी में लोकल जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी उनकी, तो उन्होंने माइग्रेट करना कम कर दिया, तो कम लेबर जाते हैं वहां पंजाब में माइग्रेट करके, या जो जाते हैं दे एक्सपेक्ट ए हायर वेज। तो पंजाब के फार्मर्स ने ये सोचा कि भाई ये वेज इतना महंगा हो रहा है, इससे ज्यादा इकोनॉमिक ये होगा कि हम मैकेनाइजेशन कर दें फार्म का। तो बड़े बड़े कंबाइन हार्वेस्टर ले आए, एक एक हार्वेस्टर एक दिन में 100 एकड़ का हार्वेस्टिंग कर सकता है, राइट? सो पंजाब में फार्मिंग इज मोस्ट मैकेनाइज्ड इन द कंट्री टुडे, राइट? अब वो हार्वेस्टिंग, कंबाइन हार्वेस्टर लगाने से क्या प्रॉब्लम हुआ कि जो हार्वेस्टर जब हार्वेस्ट करता है ना पैडी को, तो वो जमीन से एकदम जमीन से मिला के उसको नहीं हार्वेस्ट कर पाता है। वो जमीन से करीब इतना 6-8 इंच जो है वो स्टबल छोड़ देता है, राइट? दैट्स हाउ द मशीन वर्क्स। वो मशीन की प्रॉब्लम है। तो हार्वेस्टर आया, उसने 6-8 इंच स्टबल छोड़ के और हार्वेस्ट करके ले गया पूरा पैडी। अब वो स्टबल जो बचा जमीन में 8 इंच, वो फार्मर क्या करेगा? बिकॉज उसको 10 दिन के बाद वीट की सोइंग करनी है रबी सीजन के लिए। तो फार्मर के लिए बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, उसमें आग लगा दो, जल जाएगा, राइट? तो Yes sir. प्रॉब्लम सॉल्व्ड, कोई कॉस्ट ही नहीं है। सो यू कैन सी कि एक प्रॉब्लम जो है कॉमर्शियल लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए मैकेनाइजेशन किया। अब मैकेनाइजेशन जो है दैट लेड टू दिस स्टबल का प्रॉब्लम। अगर वो हाथ से हार्वेस्ट कर रहे थे, जब लेबर्स मैन्युअली हार्वेस्ट करते तो जमीन से ऐसे हंसी ऐसे काटते हैं, राइट? देखा आपने हार्वेस्टिंग हाथ से, तो उसमें Yes स्टबल नहीं sir. छूटता है। अगर वो लेबर करे वो का, तो स्टबल छूटेगा नहीं, प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो अब इस प्रॉब्लम को, अब जब दिल्ली में लोग को पोल्यूशन के महसूस होता है, तो वो बोलते हैं कि पंजाब के लोग सही नहीं कर रहे हैं, पंजाब के फार्मर्स स्टबल बर्निंग कर रहे हैं। भाई वो तो अपना इकोनॉमिक्स देख रहा है, राइट? उसको तो अपना लेबर कॉस्ट बचाना है, तो हार्वेस्टर लगाया उसने, अब हार्वेस्टर ने स्टबल छोड़ा तो उसको जला के वो खत्म कर रहा है प्रॉब्लम। तो वी हैव टू think about everybody's perspective. Mechanization may not always be the best solution, या फिर जो solution है we always have to see कि एक जो solution है ये तीनों नई कौन सी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। Yes sir. That is where जो यूनुस ने बोला कि environmentally conscious है ना, by having mechanized farming आपको efficiency तो बढ़ा सकते हैं, profitability भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा, राइट? तो by the way, government is doing a lot of things for farm mechanization. 60-70%, 90% तक सब्सिडी देती है टू फार्मर्स टू सेट अप फार्म मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर। तो एक कस्टम हायरिंग सेंटर लगा दिया, वहां पे सारे हार्वेस्टर और ये वो सब लगा दिए, तो वहां से फार्मर्स जो है वो रेंट पे लेके यूज कर सकते हैं। तो हाईली सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। इवन स्मॉल फार्मर्स कैन डू दैट। Yes sir.
थैंक यू सर। मैं देख रहा हूँ 12 बज गया है, 12:06 हो गए। कितने मिनट और हैं आपके पास? Should I continue या फिर should I stop? Sir, you can continue. It's not a problem. कितने बजे तक? Till 12:30, I guess, would be sufficient. ठीक है. What I'll do, I will take you through this slide deck in next 7-8 minutes, and then I'll leave 15 minutes again for Q&A. Okay? Perfect, sir. So I'm going to talk about this Grameen Impact Ventures, जो हमारी ग्रामीण का एक सोशल बिजनेस हमने शुरू किया है. So जब हम बोलते हैं कि मैंने पहले बोला ना कि सोशल बिजनेस हैज टू हैव अ सोशल पर्पस, तो हमारा सोशल पर्पस जो है वो पहले डेक में ही आपको दिखेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल डेवलपमेंट गोल्स, जो एसडीजीज हैं. आपने सुना होगा एसडीजी के बारे में, देयर आर 17 एसडीजीज. सो ये बिजनेस जो है, दिस डायरेक्टली एड्रेसेस 4 ऑफ दो 17 एसडीजीज कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड जेंडर इक्वालिटी. तो ये 4 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके ऊपर जीआईबी एम करता है. सो दैट सोशल ऑब्जेक्टिव हैज टू बी वेरी क्लियर. कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? स्मृति, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या सो जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करी वो है कि रूरल लो इनकम सेगमेंट्स सच एज माइक्रो बिजनेसेस, स्मॉल होल्डर फार्मर्स एंड women फेस मल्टीपल बैरियर्स in adoption and usage of financial and non-financial services in order to improve their lives, right? So यहाँ पे 3 आपको पर्सोना हमने दिखाए हैं. एक आर्टिजन है जो बैम्बू का वो टोकरी बनाते हैं. एक फार्मर है जो कि पुराने स्टाइल से फार्मिंग कर रहा है ना, बैल को लगा के, ट्रैक्टर के बिना. बिहार का फोटो है वो. और तीसरा एक छोटा स्मॉल बिजनेस है, किराने की दुकान, परचून की दुकान, व्हाटएवर, इन अ रूरल विलेज. Move to the next slide, please. Yes, sir. Yeah. So इसमें जो मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अब इन 3 लोगों को हमने पकड़ा कि महिलाएं, फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस. Only 1 in 6 people save in formal financial institutions, मतलब बैंक के अंदर. Only 1 in 12, which means 8% are able to borrow from a formal financial institution like bank, मतलब उनको credit access नहीं है. 95% of the 65 million micro, small and medium enterprises in India do not have access to formal finance, which means कि they borrow from informal sources, from money lenders, from friends and family, which restrains their business growth. अब इसमें 2 चैलेंज है, एक सोशल चैलेंज और एक बिजनेस चैलेंज है. बिजनेस चैलेंज तो ये है कि सोशली रिलेवेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हैं, जो वायबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल होगा, वो कैसे अचीव करें. डिमांड जनरेशन, कस्टमर एजुकेशन. और एक सोशल चैलेंज है कि लास्ट माइल डिलीवरी, कि अगर हमको एकदम गांव में सुदूर देहात में जाके पुअर लोगों को सर्व करना है तो उसका वो कैसे करें, सो दैट low income people, poor people are not left behind. Yeah, women are not left behind. Smallholder farmers are not left behind. Or then there are multiple barriers to adoption, कि knowledge and awareness gap है, trust deficit है, convenience का issue है, use cases, affordability, ये सब जो है social challenge में आता है. Move to the next slide, please. So what is GIV? Next, please. Yeah. So GIV जो है उसको हमने as a social business setup किया है, and ये मैं आपको example इसलिए दे रहा हूँ. It is not exclusively focused on farmers or agriculture, but it does have agriculture as an element. But just to make you aware about how we have conceived of a social business as an idea. So GIV is a social business that drives economic inclusion and growth. It operates a network of self-employed women called Grameen Mitras. It is informed by behavioral insights. हमने behavioral economics की काफी research करके उस research को इसमें include किया है. It brings curated financial livelihoods and non-financial services from a range of service providers to the base of economic pyramid, low income people के लिए rural areas में, and combines the power of digital platform with human connect and deep on ground presence. तो ये network of Grameen Mitra जो है, जो women है, women chosen from the community, करीब अभी 1300 such women are working in our network. उनको हमने एक digital platform बना के उससे empower किया है, and through that we are connecting them to a range of external actors, banks हैं, insurance companies हैं, payment service providers हैं, utility bill payment है, फिर आपको हाइजीन प्रोडक्ट है, सोलर प्रोडक्ट है,
फिर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, इन सब से हमने कनेक्ट किया है. सो इस तरह से ये बिजनेस चल रहा है. नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड. Sir, are these Grameen Mitras from the same village they are working in, Yes. or Yes. they migrate from one place No, to no, another? they must be from the same village. Yeah, because एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है कि हम बोल रहे हैं कि हमको लोगों की अवेयरनेस एंड ट्रस्ट पे काम करना है. तो व्हेन दे वर्क इन देयर ओन विलेज, तो पीपल जिनको वो एजुकेट कर रही हैं, सो दे ट्रस्ट हर एंड देन इट्स इजियर. अगर दूसरे गांव में काम करेंगे तो उनके लिए दूसरे गांव में जाना एक तो मुश्किल होगा, और दूसरा ये कि ट्रस्ट जो है बनने में टाइम लगेगा, है ना. And that also helps you to analyze the social impact that you are making, because they can provide the data. How are they impacting lives? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ये एक 3 स्टेप्स जो हमने बना रखे हैं इस स्लाइड पे सेंटर पे ना. Starts with customer education, second is customer acquisition onboarding, third is assisted customer services cross sell upsell. That's the journey of customer through this Grameen Mitra GIV model. Yeah, next slide पे move करिए, उसमें मैं आपको yes, so this is a representation of what actually GIV as a business does. So on the left side you have the users, women, micro and small businesses, households, farmers. ये हमारा demand है, हमारे customer हैं. On the right side जो है वो supply है, banks हैं, payment service companies हैं, government हैं, skilling institutes हैं, e-commerce providers हैं, agriculture agri businesses हैं, retail businesses हैं, lenders हैं, है ना, health service providers हैं. तो ये सप्लाई साइड जो राइट में है और लेफ्ट में जो डिमांड साइड, उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं? उसको हम कनेक्ट करते हैं थ्रू दिस ग्रामीण मित्रास हु आर वर्किंग इन देयर ओन विलेज. उनको हम एम्पावर करते हैं बाय बिल्डिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड जीएमसी प्लेटफॉर्म. ग्रामीण मित्र कनेक्ट प्लेटफॉर्म हमने उनके लिए बिल्ड किया है. सो दिस प्लेटफॉर्म कनेक्ट्स ऑन द राइट साइड जो सारे बिजनेसेस हैं उनको, एंड उनके हाथ में एक स्मार्टफोन है ग्रामीण मित्र के हाथ में, एंड देन दे यूज दैट द स्मार्टफोन टू डिलीवर ऑल द सर्विसेज टू द कस्टमर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें सक्सेसफुल के लिए, जो बॉटम राइट में आप जो टेबल देख रहे हैं. Be convenient, be competitive, and being consistent. So which is as social business, it's very very important कि अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कन्वीनियंट होना पड़े. किसी भी बिजनेस के लिए, इट्स नॉट जस्ट फॉर सोशल बिजनेस, कि आप बिजनेस का एक ब्रांड इक्विटी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एज ए रिलायबल, ट्रस्टेड, कन्वीनियंट सर्विस प्रोवाइडर, राइट, उसके पास ही हम जाएंगे ना. तो ये एक हमारा मंत्र है कि we have to be convenient to the people, we have to be competitive, better quality, competitive prices, better value, and being consistent, keep to deliver what the customer expects every time they come back to us. Next slide please. Yes, now ये बहुत important slide है. आपने सबने प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बारे में सुना होगा, राइट, कि जैसे एयरबीएनबी है, टास्क रैबिट है, या इवन ओयो रूम्स हैं, इस सब तरह के. तो जीआईवी भी एक तरह से एक प्लेटफॉर्म प्ले है. व्हाट इट डज इज इट मोनेटाइजेस एन abundantly available, valuable and underutilized resource. तीनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब हो रहा है. सो abundantly available, valuable and underutilized resource, उसको मोनेटाइज कर रहे हैं, which is the spare time of educated unemployed rural women. women जो कि ग्रामीण मित्र की तरह काम कर रही हैं, एजुकेटेड हैं, रूरल एरिया में है, लेकिन वो कोई जॉब नहीं कर रही हैं, वो करना चाहती हैं. उनके पास जो स्पेयर टाइम है 2 घंटा 4 घंटा, उसको हम एक जॉब अपॉर्चुनिटी में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. On the left hand side you would be seeing some other similar examples, and ये सब examples social business कोई नहीं है, वो सब जो है commercial business है, very successful billion trillion dollar businesses हैं वो सब. टास्क रैबिट, उबर, एयरबीएनबी, अर्बन सिटर, ये सब.
सो GIV का बिजनेस मॉडल सिमिलर तरह का है, बट what we are doing is कि हम low income people, farmers, women, how they can access agriculture services, financial services, skill development services, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, right? So that's the fundamental purpose, fundamental difference in purpose, why we exist. एक मैकिन्जी ने स्टडी करी है जो कहता है कि अगर इंडिया में विमेन का जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है जो कि मेन से बहुत कम है, अगर बाकी एशियन कंट्रीज में जितना विमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है उतने तक ही हम पहुंचा दें, जो कि एशिया में भी कम है ग्लोबल स्टैंडर्ड से, तो दैट विल ब्रिंग 68 मिलियन मोर विमेन इन द वर्कफोर्स. 68 मिलियन, 6.8 करोड़, and that will add $0.7 trillion, मतलब $700 billion to the Indian GDP, जो कि इंडियन GDP का 16% बढ़ जाएगा वो, just by increasing workforce participation of women in India from current around 17-18% है, sorry 21% है, वहां से करीब 10% बढ़ने से. So it's a $700 billion of untapped opportunity. That's what GIV is tapping. So अगर आपको ये सरप्राइज हो रहा हो तो कि एक तरफ तो हम सोशल पर्पस की बात कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, फार्मर्स के लिए हम उनको सीड्स एंड फर्टिलाइजर पहुंचा रहे हैं, उनको हम क्रेडिट दे रहे हैं, उनको हम बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो बिलियन ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हो. डू दे साउंड इनकंसिस्टेंट? ये कि दे बिलोंग टू टू डिफरेंट planets? I'm asking you, पूछ रहा हूं मैं. Do you find an inconsistency between these two things? You're talking about billion trillion dollars and at the same time talking about the poor people and farmers and women. Yeah, at first sight it does. It does. Yes. Yeah. So that's my job as somebody who understands business and who understands social business, is to let you know that there's again, I'm re-emphasizing a point that I made earlier, which is key: making profit, becoming successful, running a large business. There should not be any hesitation in that, provided you are serving a useful social purpose. In fact, you must have a very ambitious goal, right? And what this slide shows you is that there is opportunity. There's a billion-dollar, multi-billion-dollar opportunity. In fact, agri-tech में आज की रेट में कम से कम तो there are about dozen startups who are valued as like over $1 billion, जो कि unicorn कहते हैं. So अगर लग रहा है inconsistency, so it's all in our mind. In reality, अगर हम ambitious नहीं होंगे, अगर हम इसको बड़े स्केल पे नहीं करेंगे, तो हम कोई impact नहीं create कर पाएंगे. We will fail. The path to success is by building it for scale, right? Move to the next slide, please. So ये एक schematic representation है whereby we are saying कि हमने ग्रामीण मित्रा को लिया गांव से, गांव की महिला है, अपने गांव में ही काम कर रही है as a self-employed person. She is not our employee. She is self-employed entrepreneur. उसको हमने एक digital platform दे दिया. Now through that, in her village, she can bring access to banking, financial services and insurance services, BFSI जिसको कहते हैं, agriculture, advisory, inputs, outputs, produce का market linkage, skill development है, e-commerce है, physical retail है, ये सब काम कर सकते हैं उस एक digital या digitally enabled agent के through. अब imagine एक गांव में एक ग्रामीण मित्र है. We started about 2 years ago. ये venture जो है, we already have 1,300 such agents, and in the next 4 to 5 years, हमारा aim ये है कि इसको हम 50 districts में 15,000 villages में लेके जाएं. एक
टिपिकल डिस्ट्रिक्ट जो होता है ना इंडिया में, एक टिपिकल डिस्ट्रिक्ट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ बिटवीन 3 to 4 मिलियन, है ना। 3 मिलियन की पॉपुलेशन भी अगर आप पकड़ लें एक डिस्ट्रिक्ट की, 30 लाख की या 25 लाख की, कैन यू इमेजिन कितनी उसकी मार्केट पोटेंशियल होती है। किसी नंबर्स क्रंच करके देखिएगा कि इंडिया में जो 700 डिस्ट्रिक्ट हैं, every one of them, how much of potential that one district represents. पूरे इजराइल की पॉपुलेशन कितनी है मालूम है आपको? शायद नहीं मालूम है, बता देता हूं, 7 मिलियन। और इजराइल का आप जीडीपी देखिएगा, राइट। पूरे नीदरलैंड्स का पॉपुलेशन कितना है वो भी देख लीजिएगा। सो हमारे यहाँ एक एक डिस्ट्रिक्ट जो है ना, एंड इंडिया में बाय द वे देयर आर एटलीस्ट 2 डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच हैव अ पॉपुलेशन मोर देन इजराइल। तो एक एक डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैव सच मैसिव पोटेंशियल। कभी ये मत सोचिएगा कि पोटेंशियल जो है केवल बॉम्बे में है, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, राइट। एवरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया जिसमें कि कहीं पॉपुलेशन 15 लाख होगी, कहीं 20 लाख होगी, कहीं 30 लाख होगी, कहीं 40 लाख होगी, हैज अ मैसिव 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 पोटेंशियल, राइट। तो हम तो केवल 50 डिस्ट्रिक्ट में जाने की बात कर रहे हैं 5 साल में। अगर उस 50 डिस्ट्रिक्ट में जो एड्रेसेबल मार्केट है उसका 5 या 10% भी अगर हमने कैप्चर किया ना, आई एम नॉट श्योर कि वो होगा नहीं होगा। देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच मे प्ले टू मेक इट वेरी सक्सेसफुल और मे लीड टू इट्स फेलियर। Then this can be a unicorn. This can be a $1 billion enterprise that you're seeing in front of you. Yeah, move ahead. ऐसे बहुत सारे डिटेल हैं, बट I'll just stop at this as a last slide, which is कि एक तो मैंने आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं कि having that agent, having that digital platform, connecting the supply and the demand, इतना ही कर रहे हैं। ये तो फर्स्ट लेवल गेम है, राइट। जैसे कि आप फेसबुक यूज करते हैं या इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो आप कुछ पोस्ट करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं वो आपको कनेक्ट करते हैं, लाइक करते हैं, दैट्स द गेम एट द सर्फेस ऑफ इट, राइट। बट एक्चुअल गेम तो आपको पता है कि एक्चुअल गेम तो पीछे कहीं चल रहा है, जहां पे कि दे आर लुकिंग एट योर यूसेज ऑफ द प्लेटफॉर्म, दे आर एक्सट्रैक्टिंग दैट डेटा एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग योर बिहेवियर, एंड देन बेस्ड अपॉन दैट बिहेवियर दे आर शोइंग यू एडवर्टाइजिंग, एंड इट इज सो एक्यूरेट कि उनको पता है कि अभी आप जो है कहीं छुट्टी मनाने जा रहे हैं, अभी आप ट्रैवल का टिकट बुक करना चाहते हैं, आप होटल बुक करना चाहते हैं, आप कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं, आपको उसी चीज का ऐड दिखाएंगे वो, राइट। सो व्हेन यू हैव अ डिजिटल प्लेटफॉर्म you can play that kind of game here also. Now game again sounds a negative word. It's not a negative word. इसको आप बोलिए strategy. So data optimization. जब ये 50 डिस्ट्रिक्ट में, each district having population of 3 million, उसका 10%, तो 300,000 multiplied by 50, so 10-15 मिलियन कस्टमर एक प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्ट करेंगे। इमेजिन उसका कितना डेटा जनरेट करेंगे वो, कितने चीजों के बारे में, एंड इमेजिन उस डेटा से आप क्या कर सकते हैं, राइट। सो आई विल जस्ट काइंड ऑफ स्टॉप हियर सो दैट वी हैव सम टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स टू। ये जो आप राइट साइड में वो 4 स्टेप्स बनाए हैं, आई थिंक वो नोट कर लीजिएगा कि हाउ व्हाट्स द ट्रेजेक्टरी ऑफ using data for decision making या data for business strategy। कि पहला तो है descriptive, whereby you say कि मेरे पास information है, you describe कि what happened, उसको information को आप process करते हैं, then you reach to the level of insight कि you diagnose why did it happen, right? And then you have more sophistication in your data analysis, then you say now I can predict what will happen, right? And then you can even have foresight where you can be prescriptive what should happen, right? So there were different stages about how one can look at data optimization for business growth. Purpose is कि customers को आप attract करिए, engage करिए, retain करिए, उनका loyalty build करिए, उनको reward करिए, and then grow your business. That's your customer loyalty life cycle. Let me pause here and then see, we have another 6-7 minutes more for questions. पूछिए। Yes, sir. So I have a question. I don't know, is it... presentation बंद कर दीजिए. Yeah. So okay, sir. Thank you.
Yeah, sir. My question is, I don't know, is it relatable or not, but I think I should ask, like, what is the most difficult phase you have experienced till now, and how do you overcome that situation? Difficult phase. Yes, sir. Now, difficulty, actually मुझे लगता है कि I have been very blessed. Very blessed because मैंने बताया आपको, I started from very modest background, went to सरकारी school, I had no exposure even to English language, like till I did my finish my schooling. सरकारी स्कूल में पूरा हिंदी मीडियम में पढ़ा, छोटे गांव में. तो दैट वे आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं जहां पहुंच गया बिना ज्यादा मुश्किल, बिना कठिनाइयों के. तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि एक्चुअली कोई डिफिकल्ट फेज आया है मेरी लाइफ में. समटाइम्स यू आर काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड कि मुझे क्या करना चाहिए वो क्लियर नहीं है. व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप. तो what helps in those times, and those times have been there when I'm confused what should I do next. So usme what has helped is कि talking to people, gathering information, and उसमें क्या होता है कि एंड स्पेशली इंडिया में ये बहुत होता है कि आप किसी से पूछिए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट लेट्स से गोइंग टू यूएसए फॉर हायर स्टडीज, राइट? सो यू आर आस्किंग बेसिकली कि टेल मी अबाउट द प्लसेस एंड माइनसेस ऑफ गोइंग टू यूएसए फॉर हायर स्टडीज, है ना? तो रादर देन हैविंग अ objective conversation, the conversation becomes very prescriptive. वो बोलेंगे yes yes you must go, या बोलेंगे नहीं नहीं बिल्कुल मत जाओ, it's a very bad place. क्या गंदा कल्चर है उनका, लोग जीन्स पहनते हैं, फटी जीन्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, राइट? सो पीपल कम विद एन ओपिनियन, दे कम विद एन एडवाइस. तो एक चीज मैंने जो सीखा कि व्हेन आई एम ट्राइंग टू मेक माय डिसीजन, तो डिसीजन लेने के लिए, अच्छा डिसीजन बनाने के लिए आई हैव टू कंसल्ट पीपल. एंड व्हेन आई कंसल्ट पीपल, पीपल विल कम विद देयर ओन एडवाइस. हाँ ये करो, ये मत करो, बट टू मेक श्योर दैट आई एम द डिसीजन मेकर. So that is important. That has really been very, very helpful for me, because life becomes easier. जब कोई और आपके लिए डिसीजन लेगा and you follow it even if you're not convinced, तो it becomes difficult to walk on that path. कोई भी मुश्किल आएगी तो हम उसको ब्लेम करेंगे, अरे कहाँ फंसा दिया पापा ने, कहाँ फंसा दिया मम्मी ने, whatever. When it is our decision, then we take responsibility to live with the consequences of that decision. We work harder, we are more engaged. तो ये कहना चाह रहा था मैं. दूसरा कि एक्चुअली लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डिसीजन मेकिंग जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, कैपेसिटी है, ट्रेट है. कुछ पीपल लाइफ में फटाफट डिसीजन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं. कुछ लोग जो हैं वो बहुत इंडिसाइसिव रहते हैं, सोच ही नहीं पाते हैं कि ये करूं या ना करूं, है ना? तो मैं अपनी लाइफ में इनफैक्ट आई हैव बीन लेस डिसाइसिव देन आई शुड हैव बीन. ये भी मैं लोगों को बहुत ऑनेस्टली बोलता हूं. आई एम लेस डिसाइसिव देन आई शुड हैव बीन. लेकिन ये जो एबिलिटी है टू मेक डिसीजंस, टू बी डिसाइसिव एंड टू मूव अहेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है, इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग सक्सेसफुल. मैंने आपको थोड़ा डायरेक्ट आंसर नहीं दिया आपके क्वेश्चन का, थोड़ा घुमा फिरा के दिया, बट हाँ, so those kind of challenges I have faced in making the right decision, but in the end it has worked out well, especially with that perspective. I will make my own decisions. Yes, sir. That was really insightful answer. हाँ, मेरे परिवार में nobody was satisfied या happy या even aware कि एनजीओ क्या होता है. 26 years पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था एनजीओ का. मैंने बोला कि करना है मुझे, किया, worked out well. Parents were not convinced at that time. ठीक है, कोई बात नहीं. 7-8 साल काम किया, फिर 6 साल के बाद I joined a bank for a few months. They were very happy कि finally I am doing something that they understand.
they can share with pride to their relatives कि अरे मेरा बेटा बैंकर है, बैंक में छोड़ दिया मैंने, फिर 3 महीने के बाद छोड़ दिया वो जॉब, कोई बात नहीं। फिर बोले क्या फिर छोड़ दिया तुमने? तो बताइए, और बताइए। Do we have any other questions from the audience? I think your session was so good, they are not left with any question. चलिए, And कोई if question मैं yeah, अपनी तरफ से बता देता हूँ। आई थिंक विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, शायद किसने लिखा है कि I was walking on a path or in a jungle, and there came a fork in the path. One looked familiar, the other looked interesting. I chose the interesting one, and that has made all the difference. तो जिंदगी में आपके सामने ऐसे मौके आएंगे, आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक चूंकि आप समझते हैं वो फेमिलियर है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके दोस्त लोग वो काम कर रहे हैं, आपके परिवार में लोग वो काम कर रहे हैं, तो देयर इज अ वेरी नेचुरल टेंडेंसी टू गो एंड फॉलो दैट पाथ। ही सेज कि one looked familiar, the other looked interesting. I chose the interesting one, and that has made all the difference. So ये एक parting thought है, I thought I'll share with you. Thank you. Thank you very much, sir. अब इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता वरना उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो with that thought we can end really. Great, thank you so much. All the best. आप में से कभी भी कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है लिंक्डइन पे, यू कैन सर्च फॉर मी, प्रभात लाभ के नाम से सर्च करिएगा, मिल जाएंगे। मेरा ईमेल एड्रेस जो है आपके पास है, शेयर कर लीजिएगा हर्षित, सो दैट इफ एनीबॉडी वांट्स टू राइट टू मी दे कैन राइट टू मी। Sure. All the best. Thank you very much, sir. Thank you very Thank much you so for much, joining. sir. Bye. Thank you. Okay, the session ends here, everyone. You can leave.